Yes, good afternoon, all of you. Is my voice is audible? Is that audible? Yes. Yes, sir. Okay, you can scan this QR code for the attendance, and I'm sharing this code in the group also. I just doing this one. Okay, we will wait for a minute. So meanwhile, scan this QR code. Let the others to join. Okay, so let's start the session. So, can anyone say what we are discussing? कल हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे हम लोग? So, what we are discussing? Yes. What we are discussing in the yesterday's class, that is related to today's class. Okay, yesterday's class and today's class are very much related to each other. Can't say what we are studying yesterday to not understand today's class also. So basically, we are studying about critical section problems. Okay, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. जब कभी भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होगा, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? अगर एक पार्ट ऑफ कोड, okay, a piece of code which is shared among the different process. Okay, if I say this is my piece of code which is shared among the different process P0 to Pn. Okay, if I say this is critical section, why it is critical section? Because it is shareable. Now this part of the code is shareable among the different process. Now if it such situation occurs, so I have to ensure that, okay, I have to ensure that the critical section be used such a way that the final result should be consistent. Okay, the final result should be accurate. So how it is possible? So so whenever there is a critical section problem, okay, any problem that consists of critical section, so I have to provide a solution. Okay, the solution must ensure three conditions. Number one, it must ensure the mutual exclusion. That means if any process is executing inside the critical section, no other process are allowed to execute. Clear? Second one is progress. What the progress say? Second condition for your solution is progress. What the progress say? If we will allow the process to enter the critical section which are really interested to go inside. That means the process which is not interested to go inside, we will not allow them to enter the critical section. Okay, we will only allow those process
which is really want to enter. We will not give a chance to the process which is not want to enter. Third condition. Now these two conditions are mandatory. Every solution that you will propose, now these two conditions should be hold. One is your mutual exclusion, second one is progress. Then third, there is optional condition which is called bounded weight. Bounded weight. So what the bounded weight say? The bounded weight or bounded weighting क्या बोलता है? The process which is want to enter the critical section should not be waiting for infinite amount of time. That means there should be some amount of time for waiting a process outside the critical section. Okay, it should not be like the process want to enter the critical section and it never getting a chance. So what will happen? So that may be causes of starvation. Okay, or we can say that may be causes of deadlock. Okay, the process will not get a chance to enter the critical section. So these three conditions should be kept in mind while designing a solution. So what then we have proposed? Now then we have proposed an solution for it using the turn variable. Yes or no? तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक solution propose किया. कैसे कैसे किस basis पे propose किया? Turn variable. Now turn जो आपका था, okay? Now turn is your what? A boolean variable. That means it either takes 0 or 1. Okay, it either takes 0 and 1. So what is the problem here in this solution? So first I have to check the mutual exclusion. पहला हमको क्या check करना था? Mutual exclusion check करना था. क्या ये mutual exclusion provide कर रहा था? Yes, it is providing the mutual exclusion. How it is provided? You can check कर सकते हो if turn equal to 0. Now what will happen? This is true means it will always true. Now while turn which is 0 is not equal to 0, which is what? False. Okay, if it is false, now P1 will be at the critical section. Now, while P1 is the critical section, what I will do, I will check whether other processes are allowed or not. So similarly, I will allow P2. Now P2 will be turned. It is always true. So P2 will be here. Now what I will check? Now 0 is not equal to 1. 0 is not equal to 1, which is your true. Now this condition is true. Now this is very interesting thing. After the while loop, there is a semicolon. That means now P2 will be stay as long as this condition is true. ठीक है? क्या होगा? यहाँ पर while के बाद immediately आप लोगों ने semicolon दिया है. तो उसके कारण क्या हो रहा है? जब तक ये condition आपका true रहेगा, आपका P2 कहाँ रहेगा? इस loop while loop में ही फंसा रहेगा. Okay? इस while loop से बाहर वो कभी नहीं आएगा. That means it will never goes to the what? Critical section. So what we are ensuring that while one process inside the critical section, other process is not allowed. Now let us see when the P2 is allowed. Now once P1 is completed in critical section, what he will do? He will make turn value equal to 1. Okay, he will make turn value equal to 1 and come out of this critical section. Now check the critical section is ideal. Now if P2 will be get a chance, now what will happen? Now this condition will be what? Now this condition will be false. Okay, this condition will be false. If this condition is false, so P2 comes out of this while loop and goes to the critical section. So in this way, we have ensured that what we have ensured now, I have ensured that there is a mutual exclusion. Now this solution consists of mutual exclusion. Now second thing, what we have to do, we have to ensure whether progress is ensured or not. Okay, whether progress is ensured or not. Now suppose take a condition that, okay, let us take a condition. Let me take once again. Suppose now P2 is not interested to go to critical section. Now assume that P2 आपका कभी भी critical section में जाना नहीं चाह रहा है. Okay. Now suppose P1 is allowed. Now let me write turn equal to first 0. If turn equal to 0, what will happen? P1 is here checking the condition, and this is basically called entry condition also. Now 0 is not equal to 0, which is your false. If it is false, what I will do? I will go to the critical section. I will access the critical section. Once the P1 will access the critical section, before coming out of this critical section, what I have to make? I have to make turn equal to 1. Okay?
Now what happened? Now P2 is not wanted or not interested to go, but P1 is again interested to go to critical section. Should we allow? Should we allow progress? Progress क्या बोलता है? Progress बोलता है जो process critical section में जाना चाहते हैं हम उसी process को allow करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो जाना नहीं चाहते हम उसको allow करेंगे. So again, suppose P1 is want to go. So what I have to do? Again, I will come back here. So again, I will check the condition. Now check the condition. What is turn value? 1. Now what happens? Turn value is 1 is not equal to 0, which is true. Now this condition is true. If it is true, what happened? Now this is a semicolon here. Now P1 will be stay here as long as this value is equal to 1. Now what is happening here? The critical section is ideal. The critical section is ideal because P2 is not present. Okay, P2 is not using that, but P1 wants to access the critical section, but still it is not able to access it. So what does we understand that? Is the progress is achieved? Is the progress is achieved? No. For this solution, progress is not achieved. Fine. Progress is not achieved. So can I say this is a good solution? This is a better solution? No, this is not a better solution. We have to achieve both this. Okay, you have to achieve the progress and you have to achieve the mutual exclusion also. I hope it is clear to all of you. Is it clear? Solution 1. Is it clear to all of you? Yes? Yes, sir. So what then next we have done? Now we have proposed a second solution. Okay. Second solution, what we have done here, now instead of using the turn variable, okay, instead of using turn variable, I have used an array, okay, which is called as a flag. Okay, array में हम लोगों ने इसको हम लोगों ने बोला flag. And which type of array this one? This is my Boolean type array. Okay, this is my 0th index. This is my first index. This is my Boolean type array. और इनिशियली हम दोनों को false कर देते हैं. इनिशियली क्या करते हैं? दोनों को false कर देते हैं. Fine. So let me check again. The first, what I have to check? Mutual exclusion. That means जब एक process critical section में होगा, क्या दूसरा process allow है कि नहीं? तो suppose हम लोग P1 को पहले रन करते हैं. Now while true मतलब कितने बार भी हम लोग P1 को रन कर सकते हैं. इसलिए हम लोग while true लिखते हैं. Now what is doing P1? देखो P1 पहला आया क्या किया? Flag of 0 equal to T किया, true किया. तो सबसे पहले P1 क्या किया? Flag of 0 को क्या कर दिया हम लोग? True कर दिया. ठीक है. Now what he is doing? Checking the condition. While flag of 1. What is the flag of 1? Value of flag of 1. What is the value of flag of 1 here? It is false. Yes or no? Is it false? You can see here the flag of 1. The value of flag of 1 is false. Now this condition is false. If this condition is false, what will happen? Is P1 will be stay है, यहाँ पे stay करेगा या फिर critical section में जाएगा. Now if this while condition is false, what you have to do? I have to execute immediately after the while condition. Now what happened? The P1 will be enter the critical section. ठीक है. P1 कहाँ पे आ गया? अभी आपका critical section में आ गया है. Fine. Now I will check the mutual exclusion. How I can check? If one process is inside the critical section, then I will see whether second process can be allowed or not. ठीक है. So I will run the P2. Now P1 यहीं पर आपका critical section में. ठीक है. हम P2 को रन करेंगे अभी. Now जब P2 आएगा सबसे पहले वो क्या कर रहा है? Flag of 1 को true किया. ये भी क्या कर रहा है? Flag of 1 को क्या कर रहे हैं हम? True कर रहे हैं. ठीक है. Now once true करने के बाद, now what he will do? Check the value of this one. So while flag of 0. So what is the value of flag of 0? I can see flag of 0 equal to true. Flag of 0 equal to 2. Now this is equal to 2. Now if it is true, now you can see this is my infinite loop type. Okay, that means as long as this will be true, what will happen? P2 will be stay here. मतलब आपका P2 इस while loop में ही रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक इसका वैल्यू ट्रू रहेगा. That means when P1 is inside the critical section, P2 will never allow to enter the critical section. Fine? Clear? Now can ensure that. Now
वन टाइम ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंक्लूडेड। जब P1 जब आता था, हम P2 को क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने दे रहे। सपोज नाउ P1 is completed its tasks. Suppose P1 is completed its tasks. So before coming out of the critical section, P1 क्या कर रहा है, फ्लैग ऑफ जीरो को फिर से क्या कर रहा है, फॉल्स कर दे रहा है। नाउ फ्लैग ऑफ जीरो को फिर से कर दीजिए आप फॉल्स। ओके, फॉल्स करने के बाद क्या हो रहा है, P1 आपका ही बाहर आ गया। कहाँ से बाहर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया। ठीक है, नाउ सपोज अभी क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। नाउ सपोज अब देखो क्या P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। नाउ अगेन इट विल चेक द कंडीशन। नाउ फ्लैग ऑफ जीरो, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ द फ्लैग ऑफ जीरो नाउ दिस विल बी व्हाट, this will be false. Now if this will be false, now P2 will be entered to the critical section. Now अभी P2 कहाँ आ गया, critical section। कब आया, जब P1 आपका critical section से बाहर आया। जब तक P1 अंदर था तब तक वो P2 while loop में था। जब वो बाहर आया P1, आपका फ्लैग ऑफ जीरो को क्या किया, वो फॉल्स किया। जब P1 फ्लैग ऑफ जीरो को फॉल्स किया, तब जाके आपका ये कंडीशन फॉल्स हुआ। That means the P2 will be getting a chance here. Now I will cross check again. Suppose again P1 wants to enter to the critical section. अभी P2 आपका critical section में है, P1 फिर से ट्राई कर रहा है। Now what will do, flag of zero को again वो क्या करेगा, true किया। Now I will check the condition. Now it will check the condition while flag of 1. Tell me what the value of the flag of 1. Now at this time flag of 1 value is what, true. Flag of 1 value is true. Now if it is true, I can see where the P1 will be stay. Now P1 will be stay at this while loop until this condition is false. And when this condition will false, when P2 comes out of this critical section. That means we can say that as long as P2 are inside the critical section, we cannot allow P1. Similarly, as long as P1 is inside the critical section, we cannot allow P2. So can we guarantee the mutual exclusion for this solution? क्या हम लोग mutual exclusion को guarantee कर सकते हैं solution में? Yes, can we guarantee mutual exclusion? Can we say mutual exclusion achieved in this solution? We can say the mutual exclusion is achieved in this solution. Okay, so let us see the second one, second condition, which is your progress. Now we'll check the progress. Okay, so let me clear this thing first, then I will explain about the progress. Okay, अभी प्रोग्रेस चेक करना है। प्रोग्रेस क्या बोलता है, जो प्रोसेस आपका इंटरेस्टेड है हम उसी प्रोसेस को अलाउ करेंगे। So let me make again, this is 0 1, initially both are false, ठीक है, both are false. This is my flag array, ठीक है। Now assume that P2 is never want to go to critical section. क्या बोल रहे हैं हम लोग, P2 को इंटरेस्ट ही नहीं है, and P1 is only interested to go to critical section again and again. So I will start with the P1. So first of all, it is true means any number of times we can run the P1. Now first of all, what we are doing, flag of 0 equal to true. Now make it flag of 0 as true. Now this is true. Fine. Now while flag of 1, what is the value of flag of 1? The flag of 1 value is false. Now this value is false. Now if this value is false, what happen? Will P1 will wait here, go to critical section. If condition is false, now P1 will goes to the critical section. Okay, P1 कहाँ पर आ गया आपका, critical section में आ गया। After executing the critical section, now P1 want to comes out of it. Now what he will do? Again he will make flag of 0 equal to false. Now again it is making flag of 0 equal to 1. अभी कहाँ आ गया P1, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या critical section ideal है? Now P2 is not interested, P2 is never interested, but P1 again interested to go to the critical section. Okay, so in the previous solution अगर हम देखेंगे, it is not possible, possible नहीं हो रहा था, है कि नहीं? अगर बार बार P1 आपका ट्राई कर रहा था प्रीवियस सोल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी देखते हैं क्या यहाँ पर पॉसिबल होगा। नाउ अगेन P1 विल बी कम्स हियर, फ्लैग का वैल्यू पहले क्या करेगा,
Now again it will change the value of flag. The value of flag will be changes here. Okay, the value of flag will be changes here, which will be again true. Now I will check the condition while flag of 1. So what is the value of flag of 1? It is still false. Now it is still false. Now if it is false, will P1 will wait here or go to the critical section? अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो P1 यहाँ वेट करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. Now it is false means the P1 will enter to the critical section. Fine. Now suppose it's completed its task, it will come out of it. Before coming out, it will again make the false. Now suppose again P1 want to go to it. Now you can again check this condition will again false, then P1 will be entered the critical section. That means as many times you want, okay, P1 can enter the critical section. Still P2 is not present in it. That means जो प्रोसेस इंटरेस्टेड है, सपोज यहाँ पर P1 ही इंटरेस्टेड था बार बार क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, तो क्या हम P1 को बार बार अलाउ कर रहे हैं? यस, वी आर अलाउ. सो कैन आई से प्रोग्रेस इज अचीव्ड हियर? दिस सोल्यूशन is this solution progress is achieved? Can we say that? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So Sir, go ahead. sir, when while condition, while flag of 1 is becomes false, then also P1 is entering the loop. हाँ, जब false होगा तभी वो लूप, देखिए लूप यहाँ पर खत्म हो जा रहा है. देखिए मैं आपको यहाँ साइड में लिख के दिखा रहा हूँ. आपका जो while लूप है, while, ठीक है, while, फिर यहाँ पर कंडीशन है, सपोज क्या फ्लैग ऑफ, हम लोग चेक करें, सपोज फ्लैग ऑफ 1 चेक करें. ठीक है, फिर उसके बाद इमीडिएटली देखो सेमी कॉलम है, इमीडिएटली सेमी कॉलम है. दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूंगा, इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, इट विल बी वाइल का जो बॉडी पार्ट में ना कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग लाइक दिस, वाइल फ्लैग ऑफ 1 सेमी कॉलम. ओके, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर वाइल का कंडीशन आपका ट्रू होगा, वाइल का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो क्या वाइल लूप क्या बोलता है? अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप ना हो. बॉडी ऑफ द लूप में क्या है? कुछ भी नहीं करना है आपको. कुछ भी नहीं करना मतलब आपको वेट करना है. दैट मीन्स देखो, अगर ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, वाइल का ये कंडीशन, ध्यान से सुनना, देखो वाइल का ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ठीक है, P1 कहाँ पर है? अभी प्रोसेस P1 किस स्टेटमेंट में है? वाइल के स्टेटमेंट में है, और ये वाइल का कंडीशन ट्रू है. ट्रू है तो मतलब क्या करना है P1 को? P1 को कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है. ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी ऑफ द लूप में कुछ भी नहीं है, इसलिए इमीडिएटली हम लोग क्या किए? इमीडिएटली सेमी कॉलम दिए. मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपका जो P1 है इस वाइल लूप में ही फंस के रहेगा, इस वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, ये आपका अलग है, ये बॉडी ऑफ द लूप नहीं है, ये लूप के अलग पार्ट है. ठीक है, बात समझ में आया? इज इट क्लियर? दिस इज नॉट इनसाइड द वाइल लूप, दिस इज नॉट इनसाइड द वाइल लूप. आपका वाइल लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाना है. ठीक है, इसलिए मैं बता, ये जो सेमी कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, आपका P1 इस वाइल लूप के अंदर ही रह जाएगा, कभी भी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. Yes, sir. Okay, so but there is a one problem with this. So, no doubt this solution is achieving both your mutual exclusion is achieved and as well as your progress is achieved. But there is one problem, so let me discuss that problem. What will happen now? Suppose again we will start now with the flag variable. Okay, now 0 and 1 index. Let me make false. Both of them will be false. Okay, initially. Now suppose P1 पहले स्टार्ट करेंगे, while true मतलब कितने बार भी रन कर सकता है. Now suppose P1 is here. Okay, पहले क्या कर रहे हैं? flag of 0 equal to t कर दे रहे हैं. flag of 0 equal to t. Fine. Okay. Now before checking the while loop, suppose P1 अभी while loop को चेक करने से पहले suppose इसको हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके क्या बोले? अभी हम लोग P2 को एग्जीक्यूट करेंगे. कैन आई कॉन्टेक्स्ट स्विच? यस, वी कैन कॉन्टेक्स्ट स्विच एनी प्रोसेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, किसी को भी कहीं से भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं. ठीक है, अभी P1 कहाँ पर है? देखो P1 अभी आपका फ्लैग वाला स्टेटमेंट में.
ओके उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करके हम उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिए और P2 को मैंने रन किया। नाउ P2 को रन कर रहे हैं while true, okay, now it will check the flag of 1. Now P2 is here. What I am doing, flag of 1 equal to true कर रहे हैं। now flag of 1 is also true. Fine. Now what happened, before checking the while condition here, अब क्या किए, P2 को भी कॉन्टेक्स्ट स्विच किए। अब हम क्या कर रहे हैं, P1 को चांस दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया हम लोग, P1 को चांस दिया। P1 कहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूटिंग, P1 will start executing from here. Now it will check the condition. While flag of 1. Now what is the value of flag of 1? Now flag of 1 is true. Now while flag of 1, this is matlab while true. If it is while true, then what happen? P1 will be wait here. Okay. Now P1 will be wait here. It will not go to the critical section because there is a semicolon. Okay. If the condition is true, it is going to wait here. Similarly, now you check for the P2. Now suppose P2 is given the chance. Now P2 will execute this one. Now while flag of 0. So what is the value of flag of 0? What is the value of flag of 0? The flag of 0 value is, again, this one is also true. Fine. This is also true. This is also true. Now if it is true, now tell me if this while loop is true. So where the P1 will wait? Now P2 will be waiting here as long as this condition is true. Now what is the scenario? Now you can see, is the critical section is ideal? क्या critical section को use कर रहा है? देखो, क्या critical section P1 use कर रहा है? No, P1 is not using the critical section. क्या P2 use कर रहा है critical section? No. Is P1 is requested for the critical section? Yes, P1 is requesting. Is P2 is requesting? Yes, P2 is also requesting. Now what is the problem here? Now the problem is of busy waiting या deadlock हो जा रहा है। ठीक है, even though the critical section is ideal, okay, even though the critical section is ideal, we are not able to assign any of this process. So there is a problem in this solution. What is the problem here? The problem is deadlock. Okay, the problem of deadlock. Fine, or you can say busy waiting. busy waiting या फिर वेटिंग टाइम आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा indefinite हो जाएगा. Clear? So this is a problem with this solution. So we cannot say this is a perfect solution for two process problem. Okay. If we are deriving a Peterson solution or hardware solution बोलते हैं for two process. Okay. दो process के लिए. We will not talk about the more than two process. That is the reason I am considering only two process. So we are talking about two process solution on which this two must be satisfied, and along with that the third condition will also should be satisfied. So is it clear? I hope it is clear to all of you. What is the problem with this? Is it clear? Yes? Yes, sir. Okay, if you want, you can write down this solution number 2. So now what we will do, so we will derive or we will write another solution, okay, while using both this variable. That is, we will use the turn variable as well as we will use this flag variable. Okay. Now what we have done, now this we have derived. Okay, this is your two process Peterson solution bolte hain. Okay, if they will ask in the exam, write a two process Peterson solution or hardware solution, then you have to write this one. This solution is used for two process, okay, for solving the two process critical section, or we can say two process synchronization problem. Okay, so what we have done in this section, okay, so in this solution what we have done, now I have considered both the things. Okay, I have taken a turn variable, okay, turn variable भी लिया है, okay, और एक flag array भी ले आया समझ में, दोनों चीज दे रहे अभी. अब देखते हैं क्या होते हैं. So let me initialize this one as a false, this one as a false, and initially it will be, let me, okay, initialize accordingly. Let me initialize to 0. There is no problem. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस को अलाउ नहीं करें.
तो पहले P1 को देखते हैं, P1 को पहले देखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है? तो वाइल ट्रू मतलब ये कितने बार भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, पहले P1 यहाँ पे पहले क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू करेगा। क्या कर रहा है वो, फ्लैग ऑफ 0 को हम लोग ट्रू कर देते हैं। फाइन, फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू कर दिए। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टर्न इक्वल टू 1 कीजिए, टर्न का वैल्यू भी 1 कर दिए। फाइन, अब P1 दोनों स्टेप एग्जीक्यूट कर दिया। P1 कहाँ पर है, दिस इज यहाँ पे वाइल लूप में। ये वाइल लूप आपको एंट्री कंडीशन भी बोलते हैं, कभी कभी इस वाइल लूप को एंट्री कंडीशन बोलते हैं। मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई एम चेकिंग हियर, देखो टर्न इक्वल टू 1, नाउ दिस इज ट्रू, यस टर्न इक्वल टू 1, टर्न इक्वल टू 1, यस टर्न इक्वल टू 1, एंड फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। देखो फ्लैग ऑफ 1 कितना है, फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, दैट इज फ्लैग ऑफ 1, to check flag of 1 value which is false. Now false is not equal to true, that means I can say this first part is true but second part is false, this part is false. Now you can tell me this is AND operator, true and false, finally it will be a false, yes or no? False. False. If it is false then tell me क्या अगर ये false हुआ, ये while condition false है, अगर ये false होगा तो P1 क्या while में wait करेगा या फिर critical section में जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। ठीक है, हम लोग को क्या चेक करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है। मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, क्या दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच किए, कॉन्टेक्स्ट स्विच किए और P2 को टर्न किए। P2 विल बी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। ओके, नाउ व्हाइल ट्रू मतलब कितने बार भी ये रन कर सकता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, सो नेक्स्ट फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू। ठीक है, नाउ टर्न इक्वल टू 0, व्हाट वी आर डूइंग, नाउ टर्न इक्वल टू 0 कर दें। फाइन, क्लियर। नाउ चेक, टर्न इक्वल टू 0, yes turn equal to 0 which is true, okay, and flag of 0 equal to true. Now you can check the flag of 0. What is the flag of 0? It is true. Now this condition is true. Now true and true क्या होगा, true and true is finally true. Now it tell me if this condition is true, the while condition is true. If the while condition is true, then what will happen to P2 is going to wait in the while loop or go to the critical section? सर P2 will wait in Wait. the while. Wait in the while loop. So what we have conclude here, जब P1 critical section में है, आपका P2 कहाँ पर जाएगा? देखो जब तक P1 critical section में रहेगा, आपका P2 इस while loop में ही फंसा रहेगा, that means it will never going to enter the critical section. ठीक है, now suppose now P1 has completed its task. P1 अभी क्या होगा, critical section का काम खत्म हो गया। जब खत्म होगा, जस्ट खत्म होने के निकलने से पहले वो क्या कर रहा है, फ्लैग ऑफ 0 का वैल्यू क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। बिफोर कमिंग आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन P1, व्हाट ही इज डूइंग, इट्स मेकिंग द फ्लैग ऑफ 0 वैल्यू फॉल्स। नाउ दिस फ्लैग ऑफ 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ यू चेक, अभी आप फिर से, अभी सपोज बाहर आ गया और कॉन्टेक्स्ट स्विच दिया P2 को, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। नाउ टर्न ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू, यस टर्न ऑफ 0 इक्वल टू, sorry, turn equal to 0, yes turn value equal to 0, which is true. Now what is the value of flag of 0? The flag of 0 equal to false. Now false equal to true, which is false. Now true and false will be false. Okay, true and false equal to false. Now when this condition become false, it is become false only when कौन false कर रहा है, देखो फ्लैग ऑफ 0 को false कौन किया, जब P1 critical section से बाहर आए। That means now P2 is getting the turn only when P1 is out of this critical section. Okay, now what will happen if this condition is false, now P2 will be in the critical section. P2 कहाँ जाएगा आपका, critical section. Now you can cross check, जब P2 critical section में है, क्या P1 एंट्री कर सकता है, अगर चेक करो P1 सपोज फिर से आएगा, फ्लैग ऑफ 0 क्या करेगा, फिर से वो ट्रू करेगा। नाउ टर्न का वैल्यू क्या करेगा, टर्न वैल्यू इक्वल टू 1। नाउ चेक द कंडीशन, while turn equal to 1, yes this is true, turn is equal to 1, okay, and flag of 1 equal to true. Now check the value of flag of 1, the flag of 1 equal to 2. Now this is true, this is true, if both are true this will be true,
If it is true, what will happen? Now P1 is going to wait here only. Why it is so? Because P2 is executing or P2 is accessing the critical section. I hope it is clear to all of you. So can I say this solution is achieving the mutual exclusion? Can I say? Yes, sir. So can I ensure that my solution is achieving the mutual exclusion? Yes. Now what second thing you have to ensure? What second thing you have to ensure? Progress. है कि नहीं? Progress achieve हो रहा है कि नहीं? Progress क्या बोलता है? अगर जो process interested है, so you can copy down this one. Okay, you want to copy down this one. So what the progress say? Progress is saying that the process which is interested that are only allowed. You can try. ठीक है? अभी एक्चुअली टाइम 2 मिनट बचा है, मैं 2 मिनट में खत्म नहीं हुआ कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो. क्या करना? आइदर P1 को ही बार बार रन करना या फिर P2 को. ठीक है, दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग आइदर P1 इज अगेन एंड अगेन वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एंड P2 इज नॉट इंटरेस्टेड. Then you will find that the progress is also achieved. Now third one we can try. Third condition we can try. Third condition क्या था? What is third condition? What is third condition? Yes? Anyone? Bounded waiting. Bounded waiting. Okay. Bounded waiting मतलब no process should be waiting for the infinite amount of time. Infinite amount of time. Okay. Now you can check for the deadlock condition. जैसे हम लोग चेक किया deadlock condition, पहले P1 को यहाँ पे लेके आना, फिर इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना. सिमिलरली P2 को भी यहाँ पे लेके आना, कॉन्टेक्स्ट स्विच करना. P1 यहाँ पर, P2 यहाँ पर. फिर आप इसको रन करके देखना क्या दोनों प्रोसेस अलाउ है या नहीं. Okay, if you try, if you not get the answer, I will discuss this too in tomorrow's class. Okay, tomorrow I will discuss this too. Then I will elaborate this concept for end process also. Okay, so this is for the two process. Okay, two process solution. So what we will do, we will find this whether this is working for end process solution. Then we will talk some standard problem like producer consumer problem. Okay, then we'll be talking about reader writer problem. Okay, reader writer problem. Then we will talk at solution called semaphore and monitor. How semaphore and monitors can be used for solving end process solution synchronization problem. Okay, so any doubt you can ask me in today's lecture if you are having any query or doubt. Anyone having any doubt? Yes? Any doubt regarding this? How we are achieving what actually we are doing? Okay, fine. If you are not having any doubt, so we will stop the class here and we will continue from progress. Okay, how we can achieve the progress and bounded rate we'll discuss in tomorrow's class. Okay, thank you very much.